Arnab Goswami on the debate. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to the debate. And before the nation's sharpest opinion, I would like to welcome into my program. आज हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज खुद हमारे साथ है चित्रकूट से लाइव. प्रणाम और चरण स्पर्श. प्रणाम और चरण स्पर्श. महाराज, आपसे बातचीत करने से पहले इस विषय पर मैं कुछ 2-3 बातें अपने दर्शकों से हर दिन इस विषय पर हमेशा मैं अपने दर्शकों से थोड़ी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं. उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपसे इस विषय पर मार्गदर्शन ले हम. तो महाराज जी, 2 मिनट के बाद मैं फिर से लाइव आ रहा हूं आपके साथ. ऑल आवर व्यूअर्स आर वेटिंग टू हियर Jagadguru Rambhadracharya ji Maharaj, one of India's most well-known spiritual leaders. And what will I be talking to him on? Ladies and gentlemen, now time for the nation's sharpest opinion. I will be talking to Jagadguru Rambhadracharya ji Maharaj and other distinguished panelists today on this whole issue of a ban on firecrackers during Diwali. Ladies and gentlemen, nobody loves pollution. Everybody hates it. But are firecrackers the real reason for the pollution in the national capital region? Or are firecrackers one of the contributing factors? If you look at the sum total of the period, pre-winter and winter, when there is this smog over Delhi, which is a terrible smog, which affects people's lungs, their respiratory patterns, gives them bronchial conditions, aggravates asthma, everything. There are a number of contributing factors, and for a short period of a couple of days it is Diwali, I agree. But firecrackers, in my view, are not the principal reason, the main reason for the pollution in Delhi. So when Arvind Kejriwal says there must be a ban on firecrackers, we must not burn firecrackers, that is the reason for the worsening air quality in Delhi, he should check his facts. Arvind Kejriwal should first acknowledge what he has not done to control pollution. Arvind Kejriwal today says, हमें firecrackers पर ban कर देनी चाहिए. But in 2021, 3 years back, Arvind Kejriwal blamed Punjab for Delhi's pollution. Interestingly, after Kejriwal formed the government in Punjab, he is not blaming Punjab. He is not blaming the fact that there is a heavy smog over Delhi, which is for the main reason is the parali or the burning of crops in a particular time. Suddenly, after coming to power in Punjab, Arvind Kejriwal blames firecrackers. What is this? Till you come to power in Punjab, you say firecrackers are not responsible, and after that you say firecrackers are responsible. Ladies and gentlemen, the fact of the matter is that if Arvind Kejriwal wants, he can stop the pollution over Delhi, principally because the Bhagwant Mann government is his own government in Punjab. He can bring in rules, he can stop the parali, he can stop the burning of the crops, and the smog will be 50 to 60% gone. But will he do that? No. Why won't he do it? Because it will impact him politically. So for his politics, he is blaming firecrackers. The other point I want to make about firecrackers, ladies and gentlemen, I believe that you can celebrate Diwali with diyas. You don't have to burst firecrackers. In fact, you should try and reduce it. But you can't have a total ban on it. There is a double standards of this lobby as far as Hindu festivals are concerned. Take the example of Karwa Chauth. Karwa Chauth. There is a newspaper in Delhi which says that Karwa Chauth fasting may affect hormones, affects the health of women negatively. However, the same newspaper says fasting during Ramadan can help you in weight loss, reduce blood sugar and cholesterol. So how is fasting during an Islamic period considered to be good for health, and fasting during a Hindu festival considered to be bad for health? One has to decide. Ladies and gentlemen,
There are now a group of people who want to tell children not to play Holi, who want to tell Hindus not to celebrate Diwali, who want to pelt stones on Ganesh pandals, who want to say that if you say Bharat Mata Ki Jai, you're provoking a minority community, who say that you should not take Durga Puja immersions, the processions during immersions through what they call our sensitive areas. There are people like Mamta Banerjee who ban Durga idol immersions. There is Mallikarjun Kharge who says Shastra Puja tamasha hoti hai. Fact of the matter is, without exaggeration, I am saying, viewers, there is a direct targeting of Hindus and Hindu festivals and Hindu traditions in this country. And Arvind Kejriwal should be extremely sensitive. This whole ecosystem has problem with anything that is Hindu. They have problems with Karwa Chauth fasting, but not with Ramzan fasting. They have problem with colors on Holi. They do not have problems with any other festival. They say sweets during Hindu festivals make you diabetic, but having cakes and pies during Christmas is good for your health. It makes no sense, ladies and gentlemen. It makes no sense. And with those words, I would like to welcome Jagadguru Rambhadracharya ji Maharaj. आपको मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा महाराज जी कि ये जो आजकल कहा जा रहा है कि दिवाली के कारण बहुत एयर पोल्यूशन हो जाती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक तरह से कैंपेन बनाई गई है कि दिवाली के समय फायर क्रैकर्स यानी कि फटाकों का इस्तेमाल बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है स्वामी जी? इस पर मुझे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की नीति दो तरफी है। एक और तो किसी को कहते हैं हिंदुओं के लिए कहेंगे अच्छा नहीं, और दूसरों के लिए कहेंगे बहुत अच्छा है। यदि दिवाली के दिन पटाखा फोड़ना, इससे दूषित होता वातावरण, तो पंजाब में उन्होंने क्यों नहीं रोका पल्ली जलाने को, क्यों नहीं रोका भिन्न भिन्न प्रदूषणों को? और यदि ऐसा है दिवाली के दिन हम बंद करवाएं, तो फिर क्रिसमस के दिन क्यों पटाखा फोड़ा जाता है? 1 जनवरी क्यों पटाखा फोड़ा जा रहा है? तो सारे रिस्ट्रिक्शंस केवल हिंदुओं के लिए होंगे, उनके लिए नहीं होंगे क्या? इसे मैं मानता हूं कि जो भी संविधान हो सबके लिए होनी चाहिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। और मैं तो प्रत्येक हिंदू से कहूंगा जम करके दिवाली मनाओ, कुछ नहीं होगा। जी आप कह रहे जम करके दिवाली मनाइए, मगर अरविंद केजरीवाल कह रहे दिवाली तो दियों से मनाई जाती है, फटाकों से नहीं। अरविंद केजरीवाल को कुछ पता ही नहीं है। उत्सव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, दियों से नहीं। दीपावली मनाई पटाखे से मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल का एक साहस हो तो 31 दिसंबर को बंद कर दे पटाखा? उसमें क्यों नहीं पटाखा बंद करते? एक नकली वृक्ष की पूजा क्रिसमस के दिन करते हैं, हम साल करते आ रहे हैं। और बकरीद में, ईद में क्या क्या नहीं होता, कितने लोग की जीवों की बलि दे दी जाती है। तो क्या वहां वातावरण विषाक्त नहीं होता? तो अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें फटाके नहीं दियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोर्ट कह रही है, वो कह रहे कोर्ट की बात है। ये कोर्ट के बाद तो फिर 31 दिसंबर को क्या होगा? इनका साहस हो 31 दिसंबर को बंद कर दे, वो बंद कर दे पटाखे, कोई पटाखे ना फोड़े। 1 जनवरी कोई पटाखे ना फोड़े। तो आप कह रहे टोटल बैन हो जाए तो ठीक है, फिर क्रिसमस पर भी बैन हो, क्रिकेट मैच जीतने पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उस पर भी बैन हो, 31 दिसंबर नए साल पर भी बैन हो, टोटल बैन हो जाए तो फिर ठीक है, मगर सिर्फ दिवाली पे बैन नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं तो कहूंगा कि केजरीवाल को मैं खुल कर कहना चाहता हूं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया हम देखेंगे, देख लिया हमने, अब हम नहीं सहन करेंगे। जी मैं जगतगुरु हूं, हिंदू धर्म का धर्माचार्य, निर्वाध धर्माचार्य हूं। मैं प्रत्येक हिंदू भाई बहन से कहूंगा मस्ती मनाओ,
ये बैन लगानी है, सब जगह लगाया जाए। क्रिकेट में लोग जीतते हैं तो क्या नहीं होता, कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी होती, क्या क्या नहीं होता। 31 दिसंबर को क्या नहीं होता जी। जो नियम बने वो सबके लिए बनने चाहिए। आखिरी सवाल, वैसे महाराज जी मैं नहीं चाहता कि हर दूसरे सवाल पे मैं अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देता रहूं, मगर विषय आज दिल्ली की है और जो ये जो विवाद है ये अरविंद केजरीवाल केंद्रित विवाद है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है, एवरीवन्स लाइफ मैटर्स। मैं सबके जीवन और स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहा हूं, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मत दीजिए। मैं उनसे पूछता हूं तो फिर दिवाली के दिन चिंता करें तो 31 दिसंबर को क्यों नहीं चिंता करेंगे, 1 जनवरी को क्यों नहीं चिंता करेंगे, 25 दिसंबर को क्यों नहीं चिंता करेंगे, वो समझे चिंता करें। जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने आज हमारे डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया है। इज गिवन द डिबेट अ डिफरेंट टर्न। वी रेस्पेक्ट हिम ग्रेटली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ द कंट्री। फिर एक बार स्वामी जी महाराज जी, जगत गुरु जी, धन्यवाद और चरण स्पर्श और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और रिपब्लिक नेटवर्क की ओर से। मंगल कामना अर्नब जी, आपकी दिवाली मंगलमय हो जी, और सभी दर्शकों की दिवाली मंगलमय हो। जी 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 जी, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर पैनल इज आल्सो गेटिंग रेडी and I can see the panel. I'll show them on the screen for 10 seconds. What a great panel this pre-Diwali evening. Rohan Gupta, Dushyant Sridhar, very well-known Hindu scholar, polemicist. I would call Dushyant a polemicist because his polemics is better than anyone else's, as is Advocate Anmol Pawar, Kapil Madan, and I have Dr. Anand Arya, environmentalist. This is an important issue. I just want a small report with your permission. I'll play a small report, then we go straight into the debate. Seers fumed as AAP Supremo Arvind Kejriwal defended the cracker ban in Delhi on Diwali, urging residents to light diyas instead. Citing pollution as a pet excuse to justify the cracker curbs, even as AAP-ruled Punjab struggles to rein in stubble burning. Kejriwal said, Diwali is the festival of lights, not crackers. लाइट्स का त्यौहार है ये, दिए जला के मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। Calling out his attempt to use court directives as a convenient cover for his cracker sermon, the seers questioned why only Hindu festivals pose a risk to the environment. कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अति से ज्यादा प्रदूषण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल दीपावली पर ही बैन क्यों? हम इस बात पे नाराज हैं कि केवल सनातनी हिंदुओं के जब भी त्योहार आते हैं तब क्यों, अन्य भी तो होते हैं। The BJP too hit out at the AAP for laying the pollution blame on crackers while failing to lift the smog cloud from Delhi. इनका नियत ही है कि दिवाली ना मनने दें, एक दिन के पटाखे से कुछ नहीं होता। लेकिन अब चूंकि स्थिति इतनी गंभीर कर चुके हैं कि हम भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कदम बढ़ाएंगे। While AAP gets away despite failing the pollution test every year, the axe inevitably falls on Diwali and crackers. Is it justified? Ladies and gentlemen, to start with some facts, yesterday 79 cases were registered for the use of firecrackers and 19,000 kilograms of firecrackers was confiscated in the National Capital Region by the Aam Aadmi Party, Anmol Pawar. Well done. Now I want to show you some pictures. Everybody please look at the right hand side of the screen. Anmol Pawar, is my audio there going through to you? You can give me a thumbs up sign if yes. Anmol Pawar, can you hear me?
I need to get the audio line with him through, ladies and gentlemen. We build the suspense. I think he's calling my producer saying line is not through. He will be through with us in a few seconds, but I have to put the first question to him tonight. I just have to. So we are going to wait. We're going to give it 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Test audio 6. Test audio 7, Anmol Pawar, hello. Test audio 8, Anmol Pawar, what is going on? Anmol Pawar, hello, 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 hello from outer space. Can you hear me? Yes, now I can. I thought the pollution came in between you and me. Now listen to me. Anmol, yesterday 79 cases were registered and 19,000 kilograms of firecrackers was confiscated. On the right hand side of the screen, ladies and gentlemen, are pictures of the Aam Aadmi Party workers using the most polluting firecrackers. I am told they used hundreds of kilograms of firecrackers when Arvind Kejriwal came out on bail. Now the question is, nation wants to know how many AAP supporters were arrested for bursting hundreds of kilos of firecrackers when Kejriwal came out on bail. Can I respond, Arnab? I will respond if you don't interrupt in between. I need 2 minutes. I was listening patiently to Jagadguru Rambhadracharya ji. बहुत ही सम्मान पूर्वक और विनम्र तरीके से मैं भद्राचार्य जी को, राम भद्राचार्य जी को ये बताना चाहता हूँ, जिस बात से वो अवगत नहीं थे, कि ये बैन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया है, जो जनवरी 2025 तक लागू है। चाहे दिवाली हो, चाहे अन्य कोई फेस्टिवल हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे किसी का त्यौहार हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो। रामभद्राचार्य जी का कहना था कि पूरी तरह लागू होना चाहिए। बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरी तरह लागू किया है। अच्छा। और विनम्रता पूर्वक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को जहन में रखते हुए ये आदेश पारित किया है कि अनमोल पवार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। अनमोल पवार, आई हर्ड यू। मुझे 1 मिनट आपने कहा हर उत्सव पर, हर मौके पर ये बैन अप्लाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आज। मेरा सवाल फिर एक बार, जिसको डॉज करके, जिसको अवॉइड करके, जिससे हट के, जिससे मिस करके आज अनमोल पवार पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। A colloquial expression for trying to evade the question. Rohan Gupta, my question was that when Aam Aadmi Party workers burst hundreds of kilos of most polluting firecrackers in the national capital, how many of them were arrested? How many were arrested? The visuals on your screen, viewers. Allow me to respond. I completely agree, Arnab, and this is the real face of Aam Aadmi Party. The people of Delhi, they are paying price. They are deprived of celebrating. Okay, he's responding. 1 minute, Rohan is responding. Rohan is responding. I'm allowing him. Finally, he's answering my question. Answer. देखिए, नो इट्स फाइनली की बात नहीं है। ऐसा है ना, पहले आप सवाल मेरे से पूछोगे और फिर सीधा बीजेपी वाले के पास चले जाओगे। मैंने सवाल आपसे पूछा, आप डक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप जवाब नहीं देने देते। समस्या ये है आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। कोई समस्या नहीं। मैं रामभद्राचार्य जी को भी सम्मान पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सबका जीवन अनमोल है। अरे भाई, ये क्या इंसानियत है कि अरविंद केजरीवाल निकल रहे हैं और करोड़ों के फटाके वहां पे जलाए जा रहे हैं? क्या कैसी इंसानियत है ये? Are these non-polluting firecrackers? The honorable. Did you arrest these people? आपने अरेस्ट क्यों नहीं की इनको? The honorable Supreme Court ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए छूट है अगर इंटरिम बेल मिल जाए। जवाब तो देने दो। अब मोनोलॉग चलाना है तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार तो जवाब दे दीजिए। The fact is, जी बिल्कुल।
See, even the Honorable Supreme Court, while imposing this ban on all the states of Delhi NCR, whether it's BJP ruled Haryana or Delhi or other adjoining states, they were concerned about the fact that the enforcement agencies are not working properly. That the Delhi police, who is supposed to enforce these regulations, they are being brazenly flouted. यही तो concern है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी. Anyone who is involved in illegal act, who is not following the law of the land, who is not following the directions of the Supreme Court, who is encouraging people to burst firecrackers. Ladies and gentlemen, on my breaking news story, do you believe that the Aam Aadmi Party spokesperson has answered my question? I believe he has not answered my question. I think he agrees with me. I think he agrees with me that what happened is wrong. But as they say, you have to make sure charity begins at home. Rohan Gupta is on the debate. Why do you think this is a targeting of Hindu festivals? अर्नब, आई थिंक जब नियत में ही खोट हो तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं. जब उनके नेता बाहर आते हैं तब पटाखे फटते हैं दिल्ली में, तब प्रदूषण नहीं होता. There is no pollution because it is Arvind Kejriwal. He is out of jail after committing crime. और भगवान राम, जिनके दशहरा की खुशी में वो राम वापस आए, रावण को धन, उसके सेलिब्रेशन में अयोध्या में दिवाली मनाई गई, उससे उनको आपत्ति होनी है. क्योंकि देखिए अर्नब, 10 साल से आम आदमी पार्टी इज इन पावर फॉर लास्ट 10 years and now people of Delhi, they are deprived of celebrating the biggest Hindu festival because of the failure of this government. They are always blaming others. They are always blaming everybody around them. They are not able to find solution for last 10 years. जब पंजाब में सरकार नहीं थी, तब पंजाब सरकार के ऊपर ये लोग आक्षेप करते थे. जब दिल्ली में सरकार था, big fight versus in the middle. इसलिए सरकार ने क्यों चुना? I still remember Arnab, video of Mr. Kejriwal showing that पराली का solution लेके आए. हम लोग कुछ स्प्रे लेके आए. और 10 साल के बाद अब आज देश का हिंदू पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली हमारी राजधानी है और आपकी गलतियों की सजा आज हिंदू समाज भुगत रहा है. आपको शर्म नहीं चाहिए? लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का वो लोग विरोध करें. हर मौके पे आप फेल है, हर चीज पे दूसरे लोगों some pictures from earlier today in Ayodhya. Some pictures of earlier today in Ayodhya when the firecracker, there was a wonderful firecracker display. The pictures are on your screen. I want to bring in the second set of speakers, Dushyant Sridhar, and along with Dushyant Sridhar, Dr. Anand Arya. Dr. Anand Arya has been part of several impactful Delhi environmental projects such as Okla Bird Sanctuary, Yamuna River Restoration, protection of Delhi's wetlands, etc. Now, Dr. Anand Arya, the argument is that this is a 1 or 2 day reason for pollution. But the bigger issue for air pollution is parali, the burning of stubs at the end of the crops. The reason is something else. The principal reason is something else. The ban on firecrackers during Diwali is only symbolism. What's your take, Dr. Arya? See, I feel that Aam Aadmi Party actually has failed on every aspect of controlling environment in this area. Let us say they are saying today they are citing the Supreme Court and High Court orders for ban on the patakas. Where is it? Why is he not quoting the Supreme Court order that keeps the Yamuna clean? Why is he not doing it that the buses, which is a public transport, which reduces the particulate matter, why is he not quoting that judgment? They are doing nothing. And as you pointed out, I mean, the amount of firecrackers that were burned the day he was released from the jail on bail is enormous. I mean, I really don't understand. If Aam Aadmi Party had done a little bit of work, we will never have an AQI in this day that the burning of the patakas will take us beyond a certain limit. You see, if AQI is already 400, then every small nail in the coffin is going to hurt you. Every straw on top of the camel's back is going to hurt you. But if this 400 was 200 or 150 or 175 or even 50, which is what is required by him. If we cannot do that in 10 years, he had no business opening his mouth at all. Oh God, that's a very strong indictment. Let me tell you, Dr. Anand Arya is not a BJP spokesperson. You are completely cornered today.
You're completely cornered. You can respond, but I'll get another voice also in the meantime, and that will be Dushyant Sridhar. So an environmentalist targeting you. Now Dushyant Sridhar, Hindu scholar, wants to say something to you, and then I'll take your response. Dushyanth Sridhar. Namaskaram Arnab and namaskaram to all my fellow panelists. Wishing you all a very happy Deepavali. Arnab, the issue is about cracker ban, and no sane person in this world will say crackers is very good for the environment. Everybody will say that there is some damage. But why alone during Hindu festivals? Very quickly, 3 points, Arnab. From the Hinduism perspective, 3 things are very important. One, the scriptures, we call it the pramana, like the Ramayana, the Mahabharata, the Puranas, these that give us knowledge. And second is the prameya, that which is told to us through the pramana, which is the temples. And third are the festivals that come on different occasions like the Raksha Bandhan, the Holi, the Janmashtami, the Ramanavami. So the damage to the prameya, the temples, happened between the 10th and the 17th century in India, across India. The damage to the pramana, which is the scriptures, happened during the colonial rule because of misinterpretation, wanted, orchestrated wrong translations. And the damage to the festivals has happened in the last 70 years. So cracker ban is just an excuse. So if at all we ban crackers, let's say, okay, Arnab as a practicing Hindu, Dushyant as a practicing Hindu, we say we won't burst crackers. You know what will come next? It will say that sweets are very bad for health. Your bad cholesterol would go up. So don't have sweets. Then if we start having sweets with no sugar, then there'll be another. So every aspect of a Hindu festival will be attacked. The same insaniyat will not work when loads of goats are sacrificed on a certain festival. The same insaniyat and the care and the concern for the environment will not come when loads of trees are being chopped to erect sacrosanct trees during a festival. It will work only on Deepavali, and the stubbles from Punjab, the air that comes from Punjab will cause no harm. And for the list of people, the politicians who go into jails and quickly come out, every release of theirs will be celebrated as if it was a victory in a war. And you can go just not across Delhi, across different states. They will, when they walk out of the jail, it will be as if they have won the battle of Talikot or some other battle. And there will be drums, and there will be Anaka, Dundubi, Vadyam, and there will be crackers burst. And for that particular question, pointed question of us, no spokesperson will give you a straight answer. Yeah. I also believe, it's an attempt to make Hindus feel guilty. I saw this. Just one. See, I'll tell you. How you celebrate Holi is your choice, with colors, with paints, with water, or with flowers. But it has come down to this point, viewers, that a news site recently said that children playing Holi on the streets are unleashing terrorism. These are the actual words. There was a poll they ran. Answer now. Should we allow kids to unleash terror on the streets in the name of Holi? In other words, Ishkaran, playing Holi is an act of terrorism. But Arnab, these are real polls, yes. Arnab, there are people in this country who want to eradicate Sanatan Dharam. Now, how do you go about eradicating Sanatan Dharam? For those who want to do it, you do it by chipping away at Hindu celebrations, rituals, festivities, either by social media propaganda, where people who fly on private jets, including politicians, where the state might not have a private jet, but they still will fly in private jet, then there is no pollution. Or you burst crackers on your wedding anniversaries. Or you burst crackers when a criminal gets a bail from a court. But that is all kosher. But when it comes to Hindu festivities, Holi is eve teasing or molestation. You see the narrative which is played out on Holi. You see the narrative which is played out on Karwa Chauth, that's regressive. You see the narrative played out in Rakhi. Why does the sister need a protection? It is to enhance the position of the boy in the family. You see the narrative on Jallikattu of how it is animal cruelty. Whereas when you are butchering goats, then it is epitome of love for the same animal. But nobody will speak on all this. Mahashivratri, how it is a wastage of milk. So it cannot be a coincidence that every Hindu festival is somehow to be spoken against, is somehow bad for environment or women's safety, or is somehow bad and needs to be regulated, if not outrightly banned. So it is not something in isolation. It is something you have to see one after the other, which is happening, whereas it never happens on any other festival. Now a latest thing has happened, Arnab, which you're not covering. How from Mela, Deepavali Melas, the word Deepavali is trying to be eradicated.
The words which are coming is Jashan-e, No, this, these Noor-e, and this, whatever, you know whatever. Ishkaran and That you know is coming. Ishkaran, Now Kapil, they're Kapil, this is change what the is name going of to Diwali itself. what is going to lead to is a consolidation of Hindus. I can see it happening. All these things are attacking Hindus. Diwali mat karo, Holi mat karo. Diwali firecrackers are the chokehold of traditions. This was an article put out in The Wire. You can expect it. These are the same people who want Indian children to celebrate Halloween, go around with cut pumpkins, celebrate Christmas. Hinduism is about caste, is about superstition. Playing Holi is terrorism. Fasting during Ramadan can help you with reduce your blood sugar, but Karwa Chauth can affect everything from your metabolism to your stress responses. ये क्या है कपिल मदान? ये anti-Hindu propaganda है. Arnab, can I give you a very quick? Can I give you? But tell me one thing. Did you say that? Did you say? One minute. Why don't you stop IPL from bursting firecrackers at the end of IPL matches? Now, allow me to give you a very quick response. Is IPL secular? Are they non-polluting firecrackers during cricket matches? Arnab, do you tell Virat Kohli? I just a minute. No. Arnab, I was very patiently hearing our spiritual leader and who very Rohan. clear and very Rohan and Dushyant spoke about the fact that if there is a ban, the ban should be there throughout the year and all the festival. And I absolutely agree with him. There should not be any kind of differentiation insofar as festival are concerned, because pollution is pollution. Be it any day, be it any event. If you are using crackers or allowing crackers for one particular festival or an event, you cannot impose a ban on the other festival. Now, having said that, let me just say a few things here. कुछ ज़्यादा हो गया कपिल, ज़्यादा targeting of Hinduism हो गई. Just a minute. There's no logic anymore. Now the point. No, let me give you the logical thing now. Now, let me just tell you one thing here. You want to connect it with the religion. Let me ask you one more thing. And Mr. Diwali is connected to religion. आपको अच्छे लगे नहीं लगे, Diwali is connected to religion. अरे just a minute. Diwali Hindu festival है. अरे दिवाली हिंदू फेस्टिवल है. आप बोलिए दिवाली हिंदू फेस्टिवल है. मेरे धर्म का फेस्टिवल है. धर्म का तो ऐसे मत बोलिए कि दिवाली इज लाइक क्रॉसिंग द रोड. मेरा फेस्टिवल है. मेरा त्योहार है. मेरा त्योहार है. आपका त्योहार है. हमारा त्योहार है. पर रोहन जी यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं. मैं रोहन जी से एक बात पूछना चाहूंगा. रोहन जी को पूछिए. ये तो जरूर बोलेंगे कि पटाखे जलाओ, पर रोहन जी ये नहीं बोलेंगे जो सड़क पे हमारे लोग जिनके पास छत नहीं है, जो मोदी जी कहते थे 2022 में सबके पास घर होगा, ये वो नहीं बोलेंगे उनको जाके खाना खिलाओ, उनके साथ जाके मिठाई बांटो. अच्छा, तो दिवाली खेलने से गरीबों को नुकसान होता है, यह नई लॉजिक है. मगर बकरीद से किसी को नुकसान नहीं होता. आपने कहते गरीबों का कहाँ पे गोश्त मिलती है. नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? दिल्ली की सड़कों पे जिन लोगों के पास दिवाली मनाने चलेंगे या आप अपने प्लस लटेन के घर में दिवाली बनाएंगे? बताइए, आप चलेंगे मेरे साथ? आप कहिए ना, इफ्तार बड़े इफ्तार बंद कराइए. आप नहीं जाएंगे, खाना गरीबों को दीजिए. नहीं जाएंगे. रोहन जी हर बार हिंदूज को गिल्टी फील कराने की कोशिश, क्योंकि हर बार इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है. इनको अच्छा, जवाब फ्रॉम द बीजेपी स्पोक्सपर्सन. रिप्लाई रोहन गुप्ता. हिंदुओं की भावनाओं से, देश की हिंदुओं की भावना से खेलना बंद करो. देश का सबसे बड़ा त्योहार है, देश की राजधानी के लोग ये त्योहार नहीं मना पा रहे. आप सबकी विफलता है. आप लोग खाली पटाखे रोकने से पोल्यूशन रोकते हैं. व्हाट एक्शन यू हैव टेकन इन लास्ट 10 years? यू प्रॉमिस. आपने कहा था हम यमुना साफ कर देंगे. आज झाग से यमुना उभर रही है. क्या एक्शन लिया आपने? क्या पटाखे रोकने से यमुना साफ हो गई? प्रदूषण खत्म हो गया? एक एक्शन आपने कॉन्क्रीट लिया हो तो बताइए. आपने खाली ब्लेम गेम किया है. और जब हिंदुओं की बात आती है तब आपके मुंह में दही जम जाता है. आपको लगता है कि पटाखे रोकने से प्रदूषण रुक जाएगा. एक दिन का फेस्टिवल होता है. आपने क्यों हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर Dushyant also on this debate. Dushyant, I want a small counter from you to the argument put before I go to the AAP spokesperson, where he says that instead of celebrating festivals by spending money on firecrackers, distribute the money to the poor. Arnab, namaskaram again. See, I am not connected to any political party.
whatever little I've learned from my acharyas from scriptures, I do not need to learn how to celebrate festivals from party spokespersons. We know what dharmam and dhanam to do. We do. Every astika, every Hindu, whatever yatha shakti, whatever that person's earning is, they do charity. We don't need to sacrifice our festivals and our traditions to be charitable. We can have a blend of both. Correct. We can be charitable as well as follow our traditions and customs. So my earnest and my very humble appeal to anybody from any party is to stop advising Hindus how to celebrate our festivals. I want a response from Anmol on that. Acharyas who have coded for us, and we know what better to do. That's exactly. Anmol will respond to that. Anmol, I want you to respond to that and the point made by Dr. Anand Arya earlier, where he said that you have utterly failed on issues such as parali, buses and other forms of pollution, as well as the point which has been made that Hindus don't need to be constantly lectured on how to celebrate their festivals, because you don't lecture Muslims on how to celebrate their festivals, or Sikhs or Parsis on how to celebrate their festivals. Itni advice हिंदुओं को सिर्फ क्यों? अनमोल, देखिए ऐसा इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि आप हिंदी बेहतर ना समझ पाते हो, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे बता दिया था that this ban has been imposed until January 1, 2025, whether it's Diwali, तो ये आपके लीडर की जब रिहाई हुई तब आपने बैन को, तब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सोची? जब आपकी लीडर की रिहाई हुई तब आप इतने हजार किलो आपने फटाके क्यों उस समय क्यों आपने फटाके जलाए? आपने उस समय नहीं सोचा पोल्यूशन के बारे में? प्लीज ऐसी बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस तभी भी थे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को आपने क्यों नहीं मानी? Let me respond. Why didn't you listen to them? Yes, respond. Let me respond. Mr. Anand talked about stubble burning. Avoiding my question again. The Honorable Supreme Court on 16th October lambasted the central government. Just let me complete. Avoided the question. The Honorable Supreme Court lambasted the central government. Mr. Anand also spoke about the visuals I'm showing. Mr. Anand Arya also spoke about the visuals I'm showing. As far as stubble burning is concerned, Arnab, if you'll interrupt, I'll not speak. If you'll interrupt, Mr. Arya also spoke about the visuals I showed. That's what I'm telling you. अगर आप सवाल पूछते हैं तो जवाब देने दीजिए। मगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दीजिए, अन्यथा कोई पर्पस नहीं है डिबेट का। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आनंद जी के सवाल का जवाब पूछेंगे नहीं। मैं मेरे सवाल का जवाब वो पूछ रहा हूं मैं कि ये क्यों हुआ? ये क्या तरीका है? मैं तरीका आपको कह रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब ये फटाके फोड़े गए, जब आपके लीडर की रिहाई हुई, तब क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं थे? सबके सवाल मैं सबके सवाल के जवाब दूंगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। As far as stubble burning is concerned, the Honorable Supreme Court lambasted the Haryana government, and the data shows that pollution in Haryana has increased twice, and in Punjab the stubble burning incidents have reduced by 50% in last 3 years. Dr. Anand Arya will respond. Pollution Control Board data. Dr. Anand Arya will respond. IARI data. Dr. Anand Arya will respond to Anmol now. With the central government agency. I think Anmol, Dr. Arya is already responding to you. And adjoining states of Madhya Pradesh and Rajasthan, they have increased by more Please than listen to Dr. Arya. I am requesting you, sir. Please, thank you, Anmol. Please, he wants to respond to you. Thank you, Anmol. Aam Aadmi Party has a very, they have refined this deflection. 1 minute, Anmol, listen to him. He's speaking to you, Anmol. He's a very senior man. Listen to him. You see, Aam Aadmi Party has perfected the art of deflecting the questions and not answering, and taking a subject from London to America. So I'm placing the facts before you. They mentioned, they talked about Supreme Court. I do not understand why they are not talking about the Supreme Court. Other decisions. We are number 1 in the country. If you had done, tell me then why the hell is the AQI 300 plus today? I challenge you. Tell me a single state other than Delhi. Have you cleaned Yamuna? There is a direct. Have you cleaned Yamuna? There is an NGT order of 2015. Anmol, louder. Environmentalist. Anmol. And I am very, very shocked that you have not get your facts correct. On the road, 10,000. Arya. No, you have not done it. That's a Supreme Court order.
Had you done your basic things of today in the last 10 years, today we will not be talking about the ban other than Delhi. Because that's only a 4 days. Why are you being selective? Why are you not highlighting the fact that Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, they have the largest number of stubble burning cases, more than 77%. Talking about you are running away. The NCR pollution and why the ban on cracker today is only because of ladies and your gentlemen, failure on account of ladies and gentlemen, I am of a view as far as possible we should avoid the use of extensive firecrackers. This debate is going on. I'm not being able to stop it. Okay, Dushyant raises his hand out there. Dushyant, quickly. Arnab, I'm the self-appointed spokesperson of Arnab. So to the very respected spokesperson of Aam Aadmi Party, I will put forth your question again. The question is very simple. Cracker ban has been imposed. Supreme Court order has to be followed. Arnab's question was, when Arvind Kejriwal ji was released, there were many crackers burned. Was that right? Yes or no? Thank you. And if it was wrong, why were the people responsible for that? Were they punished or not? Simple question. He won't answer. Arnab, I am very sorry to Dushyant ji. I didn't know कि उन्हें हिंदी नहीं आती. मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उनका, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था उन्हें शो में. I told him at the very beginning that even the Supreme Court has expressed concern over the enforcement of these directions. But why did your party flout it? Must be booked. What are the enforcement agencies doing? What are the enforcement agencies doing? What is the Delhi police What about your workers? समझ आ रही है आप हिंदी में When your government is with the view that the imposition is right, why no action against your workers? हिंदी तो आप What action you have taken against your workers? आपने क्या मिसाल सेट की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना चाहिए? आपने क्या मिसाल सेट की बताइए? कौन से वर्कर को अरेस्ट किया आपने? कौन सा एक्शन लिया आपने बताइए? कोई और भाषा आप सुनना चाहते हो तो मैं प्यार से बताऊं आपके लिए दिवाली बड़ी है या अरविंद केजरीवाल का जेल से छूटना? आपके लिए तो उसी दिन दिवाली थी. आपके वर्कर को अरेस्ट किया आपने? आपके वर्कर को अरेस्ट किया आपने? एक्शन लिया आपने? अब बताइए कितना एक्शन लिया कि नहीं लिया? अब आपको हिंदी नहीं सुनाई देगी, अब आपको उर्दू सुनाई देगी, आपको हिंदी नहीं सुनाई देगी. One of the, according, I don't remember the exact facts, but I'll tell you, Anmol, listen to me. That they have cut 1,100 trees in an eco-sensitive zone. Listen to me, Anmol now. Anmol, listen to me. Everyone is aware of it. Listen to me. One of the advantages of being an experienced journalist is that I can go back in time and pick up facts which you may not know about. Now, the fact is that when Arvind Kejriwal first became Chief Minister, Ishkaran may remember, you have to respond to that also? You see, उस पे भी respond करोगे? Anmol, come on यार. पिछले हफ्ते के बता दो जनता को facts. अच्छा, now the fact. आप बताओ ना कि IARI का डेटा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, जो ये कहता है कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स बीजेपी रूल्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं. और पंजाब ने 50% से ज्यादा इन्हें कम किया है. क्यों नहीं बता रहे आप देश को? ये बताइए ना. आप 10 साल पहले जा रहे हो, एक हफ्ते का डेटा आप बता नहीं रहे. आप क्यों ही दिवाली के पीछे पड़े हुए हैं? आपको क्या मिलता है? आप ये बताइए, आपको क्या मिलता है? दिवाली के पीछे पड़े हैं. दिवाली सबसे बड़ी विलेन है. सबसे बड़ी विलेन दिवाली बन गई. काटे इको सेंसिटिव जोन में. अच्छा, तो दिवाली पे सारे इको सेंसिटिव रूल्स अप्लाई होंगे. होना पड़ा उन्हें, सिर्फ हिंदू और दिवाली पे होगी. सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बताइए कि अरे सर्वोच्च न्यायालय थी ना जब आपके नेता निकले रिहाई पे और आपने वहां पे कितने हजार किलोग्राम के पटाखे फोड़े, तब आपको पूरी छूट मिलती है. अर्नब जी, आप तो आपको पूरी छूट, आप भी थे वहां पे, आप भी पटाखे फोड़ रहे थे, मुझे खबर है. आप भी पटाखे फोड़ रहे थे वहां. यू आर ऑल्सो देयर सेलिब्रेटिंग विद फायरक्रैकर्स. आप उन्हें सच्चाई बताइए. आप भी सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे. ये भी बताइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार-बार अपनी ये व्यथा जाहिर कर रहा है कि एनफोर्समेंट क्यों नहीं किया जा रहा डायरेक्शन. चलिए, हिंदुओं के पीछे ही पड़े, दिवाली के पीछे पड़े. सवाल भी पूछिए साथ. सब गलतियां हिंदुओं की है. सारी सजा हिंदुओं को दीजिए, दिवाली पे दीजिए. क्या मिलता है? आप गढ़ रहे हैं नैरेटिव. हमारा पूरा सम्मान है त्योहारों के लिए. तो अगर आपको सम्मान है तो फिरोज शाह कोटला में जब बड़े क्रिकेट मैच होते हैं तो फटाके क्यों फोड़े जाते हैं?
वो भी तो दिल्ली में है ना। बैन है अर्नब जी, एवरीथिंग इज बैन। तो आप पे बैन क्यों नहीं थी? ये क्या है? ये तस्वीरें फ्रॉड। आपने क्यों हजारों किलोग्राम्स के फटाके फोड़े? व्हाई डिड यू, इफ देयर इज अ बैन, व्हाई डिड यू ब्रेक द बैन? भाई दिवाली पे बैन है, आईपीएल पे बैन है, मगर अरविंद केजरीवाल के इंटरिम बेल पे बैन नहीं है। क्रिसमस पे बैन है। हर अरविंद केजरीवाल के रिहाई के समय बैन थी क्या? पूछता है भारत। आप मत कीजिए, जवाब दीजिए। की जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। और भारत यह भी पूछता है कि सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछते। और मैं आपको तो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप बैन करना चाहते हैं मगर आप ही बैन को तोड़ रहे हैं। नोटिफिकेशन पूरे देश के सामने है, तो हिंदू फेस्टिवल को क्यों टारगेट किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा? Arnab, see another thing. In this debate, they say कि दिवाली के समय यहाँ पे देश में गरीबी है, किसी की छत सर के ऊपर छत नहीं है। वेरी सैड कि देश में या दिल्ली में गरीबी है, पर ये गरीबी तो क्रिसमस के समय भी होती है, ईद के समय भी होती है, होमलेसनेस तो यूएस में भी होती है। तो ये दीपावली के समय किसी के सर पे छत है या नहीं है, उसका दीपावली से क्या लॉजिक है जोड़ने का? महाशिवरात्रि के अंदर दूध से जोड़ने का लॉजिक क्या है? यही मैं आपको बात कर रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम अनमोल प्लीज रिप्लाई। ओके, अनमोल इज रिप्लाइंग। अनमोल रिप्लाई करे, उसके बाद रोहन गुप्ता। अनमोल देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा ईश्वरन भंडारी जी से कि या तो सुनने की क्षमता को बढ़ाएं या झूठ बोलने की क्षमता को कम करें, क्योंकि ये वक्तव्य कपिल मदान जी का है। हमारा सम्मान है हिंदू त्योहारों के लिए, और ये बैन जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लागू किया है। शर्म तो ये जो के पैनल पे कुछ लोग ये जो यमुना में there are pictures these days, viewers, of there is so much chemical waste from the Yamuna. I don't know if I have the pictures here. You cannot blame Hindu festivals for everything, and the nation wants to know when you travel from Noida to Delhi, when you travel from... I need to answer this. Arnab, he keeps lying. Everybody has to respect the Supreme Court guidelines. Everybody has to do it as per the guidelines. That is why the question, why those AAP workers who were not obeying the guidelines of the Supreme Court. But he is not answering that question for the last 40 minutes. Why are you encouraging people to burst crackers on Diwali? Then why are you encouraging people to burn crackers on Diwali? Oh, your argument is no. Viewers, the argument therefore that Anmol is presenting tonight. The argument, okay, viewers, I'll tell you. Anmol, you are a little... Anmol, it's Diwali tomorrow. I don't want to trouble you too much. Now listen to me. The question is this, Anmol. Your argument is that we did... look at the pictures of Yamuna today. You know, that's not snow, that's froth, that's sludge. This is the pictures of the Yamuna. In Delhi today, this is what the Yamuna looks like. All sludge, foam, chemical waste thrown in. Is Diwali responsible for this also? Is my question on the debate tonight. किन चीजों को के लिए आप हिंदू एक मिनट आप हिंदू फेस्टिवल्स को आप ब्लेम करेंगे? ये क्यों हो रहा है? क्या दिवाली इसके लिए भी जिम्मेदार है? It's a question raised by Dr. Arya earlier, and I'd like Rohan to come in. Rohan is quiet on the debate tonight. Rohan, can I respond? No, after Rohan, please. You've taken more than 50% of the time. Let him come in and then you respond. After him, you come back. Arnab, yeah, Rohan. Arnab, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आज की डिबेट में, you have been giving time to आम आदमी spokesperson. He is not answering the right questions. आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, तो आपके वर्कर के बैन का असर क्यों नहीं है? क्या आपके लिए दिवाली से ज्यादा बड़ा दिन है जब अरविंद केजरीवाल को रिलीज किया गया? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बिग फाइट टुनाइट बीजेपी, आप फाइट रोहन गुप्ता ऑन द कमबैक। आपके बोलने से हकीकत नहीं बदलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, या तो गलती माननी पड़ेगी कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे वो गलत हो, माफी मांगिए देश के सामने। ये डबल बात मत करिए, आप सबको चुप करवा रहे हैं। आपने समझ क्या पूरा देश जानता है आप महाझूठे हो। आप लोग आप अपनी विफलताओं पर ठीकरा जनता पे मत छोड़िए। ये दिल्ली राजधानी है देश की, अगर वो दिवाली नहीं मना पा रही आपकी विफलताओं के कारण है। अभी छठ पूजा आ रही है, आपने यमुना का क्या हाल किया है? अरविंद केजरीवाल को लेकर दुखी मनाई है यमुना में,
मालूम चलेगा। यही केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, हर साल वादा किया है। ये इसमें किसकी गलती है? सुप्रीम कोर्ट की गलती है, दिल्ली की जनता की गलती है। आपने पॉल्यूशन कम करने के लिए 10 साल में क्या एक्शन लिया बताइए आपने? एयर पॉल्यूशन के लिए क्या, वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या? सिर्फ आपने हवाई वादे किए हैं। और जहां पे भी आपकी गलती है आपने दूसरों को ब्लेम कर दिया। कभी पंजाब में सरकार नहीं थी, पंजाब को ब्लेम कर दिया। अब हरियाणा में नहीं, हरियाणा को आप जिम्मेदारी कब लेंगे अपनी गलतियों की? कब तक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। आपकी ब्लेमिंग पार्टी हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। टिप्पणियां की हैं अनमोल इनएफिशिएंसी पे, उस पे जवाब दो। शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे देश की राजधानी की सत्ता चलाते हुए हर विफलता के ऊपर दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं आप लोग। Arnab, you have asked a question about Yamuna water. Can I respond quickly? आप करप्शन के लिए हैं, आप लीकर कांड के लिए हैं, आप स्कैंडल के लिए हैं। अरे भाई साहब परेशान मत हो गुप्ता जी। आपका चेहरा वैसे ही देश के सामने बेनकाब हो चुका। आप जनता जानती है कि आप कितने झूठे लोग हैं। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनकी सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप प्रदूषण कम करने में कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि आप चाहते हैं कि लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ना माने। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आप कानून में आस्था नहीं रखते। I am closing the debate tonight with sharp opinions, and I wish you all, diya or cracker, a cracking Diwali. Have a wonderful Diwali. My best wishes to you on Diwali. I'll see you very soon. Only for now, the debate is continuing, and remember viewers, on the other side,